हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है ऑन दिस मेकअप लुक दैट आई हैड क्रिएटेड। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, जहाँ पे मैंने पेन स्टैंड बनाना दिखाया था आपको ऑन द इंट्रो। सो अगर आपने वो वाला वीडियो देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए। सो फॉर दिस मेकअप लुक, हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट स्टेप इज़ टू मॉइस्चराइज़ योर फेस। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पॉन्ड्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको सेम प्रोडक्ट लेना हो तो ज़रूर चेक कीजिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Now for moisturizing my lips, I am using Biotic Biofruit Lip Balm. I am taking gold primer from Huda Beauty for priming my face. पहले मैं प्रोडक्ट अपने टी जोन पे अप्लाई करूँगी अच्छे से, देन आई विल स्प्रेड इट ओवर ऑल ओवर माई फेस। Now for the foundation, I am taking LA18 foundation. My shade is 04 Coral. इस मेकअप लुक के लिए मैं कोई भी कंसीलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं फाउंडेशन को ही एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी। पहले मैं उसको अपने डार्क स्पॉट्स अंडर आईज़ अच्छे से लगाऊंगी एंड देन अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी अपने फिंगर्स के हेल्प से। अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी एंड ऑलवेज़ रिमेंबर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को हमको यूज़ नहीं करना है, उसको पहले पानी में डुबो के निचोड़ना है, देन वो डैम ब्यूटी ब्लेंडर को हमें यूज़ करना है, जिससे अच्छे से फिनिश आए हमारे फेस पे। अभी मैं फाउंडेशन को पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी एंड नेक पे भी अप्लाई करूँगी एंड देन मैं ब्लेंड कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। नाउ फॉर सेटिंग माई फेस, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे रोज़ पाउडर। नाउ फॉर माई आईज़, मैं यहाँ पे ले रही हूँ हिलारी रोडा का 15 कलर आई शेडो पैलेट 01।
अभी मैं ले रही हूँ ऑरेंज शेड एंड उसको मैं अप्लाई करूँगी अपने क्रीज पे एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नाउ आई एम टेकिंग दिस रेड शिवर शेड एंड इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर से मिडल तक लगाऊंगी एंड अच्छे से ब्लेंड करूंगी। नाउ आई एम टेकिंग दिस गोल्ड शेड एंड उसे मैं अपने इनर कॉर्नर से मिडल तक अप्लाई करूँगी एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो आवर आई लुक इज़ डन। अब बारी है हाईलाइट करने की, तो मैं क्या करूँगी, इसी पैलेट से दिस गोल्ड शेड लूँगी ऑन अ फ्लफ़ी ब्रश एंड उसे मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ करूँगी। अभी मैं ले रही हूँ M&N का आईब्रो पेंसिल एंड उसे अपने आईब्रोज में अप्लाई करूँगी।
अभी आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्लू हेवन जेट बोल्ड आईलाइनर एंड मैं इसे विंग ड्रॉ करूँगी। नाउ फॉर द लिपस्टिक, मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन कलर सेंसेशनल लिपस्टिक ऑन द शेड 695 डिवाइन वाइन। सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे मस्कारा लगाना भूल गई थी। सो फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू गाइस, सी यू।